के क्या नहीं समझ में आ रहा है उसमें? थर्ड स्टेज वो तो स्लोप डेवलपमेंट का पार्ट है कि जो स्लोप बनेगा, what is he saying? There is a slope replacement. So what happens in the slope replacement? See, I am doing his theory only now. वो कहता है there is a ratio between upliftment and down cutting. What does why Davis is so simple? Because Davis कहता है once the upliftment stops, then there will be erosion. So वहाँ पे upliftment का और slope के shape का कोई question ही नहीं है. V-shaped valley बनेगा, बाद में U-shaped बनेगा, बाद में there will be flat surface. Peng says कि the shape of the landform will be determined by the ratio of कितना ज़्यादा upliftment हो रहा है and how much the down cutting is occurring. If the upliftment is greater, we will have which slopes? Convex slope. If the upliftment is less and there is more erosion, concave slopes. Fine. Now, based on this, he says there are three stages. Initially, there is slow upliftment, then there is rapid upliftment. So, initially the upliftment is slow, then the upliftment is rapid, and then after that it keeps on slowing down, and once, then later on the upliftment will stop. That is, this if is the graph of upliftment as per time. ऐसा कोई graph नहीं है, I am just making it for you to understand. This is upliftment and this is the time. So initially there is a slow upliftment. Once there is a rapid upliftment, this stage is off stay, Gunde, glitch, formige. यहाँ पे he says what will be the slopes? There will be convex slope. Fine. Then there will be second ऑफस्टे गुंडे के बाद the second is glitch formige elvetunge. मतलब in simple words, the period of waxing, the period of uniform development. He says in this initially there is 2A में rapid upliftment, then B में there is a uniform upliftment and erosion, and C में there is a no upliftment. So ultimately he is saying because of in this stage upliftment is matching the erosion, uniform slope is formed. पहले convex slope, उसके बाद uniform slope, and then once the upliftment has stopped, in the third stage there is abstegunde, means no upliftment, and therefore ये जो slope बन चुका है, as there is no upliftment there is more erosion. So ये slope कैसे बनेगा? Due to erosion it will be this way. पहले नीचे का sides will be eroded. Fine. All the materials which are falling here will be taken by the reverse. So over the period of time this slope will get converted like this. So ये कौन सा हो गया? Concave slope. Again over the period of time as the upliftment is not occurring, this slope will be converted here. So uniform slope भी चला जाएगा. There will be convex and concave slope. Now in this convex slope which is formed here and the concave slope which is formed here, understanding everyone? In this convex slope the materials which will be broken by weathering, क्योंकि weathering तो होगा even if the upliftment has stopped, erosion तो होगा, there will be erosion and weathering. This weathered material, will they stay at the same place or will they fall down? The sediments which will be broken will be falling down and will be collected here. So इसीलिए वो इसको कहता है gravity slope और Boschungen. That is why it is known as an gravity slope. Fine. And this sediments then will be taken by the river, removed. Therefore इसको कहता है वो wash slope और Hadal Hangen. So because the upliftment is not there is no question कि अब convex slope बनेगा. Upliftment has stopped in this stage. So जो convex slope है वो अब बनना बंद हो गया. So it will now be converted into concave slope. कैसे? Concave slope will increase in length. अब ये पार्ट बन गया concave. यहाँ से ये पार्ट बन गया concave. Fine.
फिर कॉन्केव स्लोप विल इंक्रीज अगेन इन लेंथ, तो ये माउंटेन इरोड होना शुरू हो गया, एंड दस अल्टीमेटली कॉन्केव स्लोप विल इंक्रीज, यहाँ से also concave slope will increase, and thus this height of this mountain will keep on decreasing, and this is what is known as slope replacement. So ये जो mountain, it is sharp because of convex slope or because of slope replacement. अगर ऊपर से दबा दबा के मैं नीचे लाता, U shaped valley, पहले V shaped valley, फाइन, V shaped valley बन गई, फिर V shaped valley is converted into U shaped valley, and thus over the period of time ये ऐसा लैंडफॉर्म बन गया ड्यू टू इंक्रीजिंग U shaped valley. So obviously ये राउंडेड स्लोप्स है डेविस, इसमें वैली नीचे नहीं आ रही है, इसमें नीचे का स्लोप ऊपर जा रहा है, and as a result of this peak is sharp, and hence it is known as an gravity slope. But ultimately this area will be reduced in height, and जो isolated mountain होगा it will be known as incel. क्या difficult है इसमें? कुछ नहीं. Yes, it is reducing in height, and जब उसकी height सबसे कम हो जाएगी it will be incel. That is second cycle of erosion. If there is endogenetic force again increasing, the cycle will repeat again. It is not as difficult as made out to be. Difficult इसलिए लगता है because the words are difficult. Words भूल जाओ, period of waxing, rapid upliftment, convex slope, यही आंसर में होना चाहिए. Period of uniform development, fine. It is divided into 3 stages. First stage, upliftment is rapid but slowing down. फिर upliftment matches erosion. Because upliftment is matching erosion, uniform slope बन गया, and then upliftment stops, so concave slope बनना शुरू हो गया. In the third stage, as the upliftment has totally stopped, so river is eroding it. Because of river eroding, the area gets converted into gravity slope and wash slope. As the river will continue उसका erosion process, the wash slope will increase and the gravity slope will decrease. And therefore the theory is known as slope replacement. Final stage, over the period of time the entire landform, prima rumph, जो initial landform था, it is converted into end rumph, and this end rumph is having few isolated hills which are known as inselbergs, or fine. What is there in the theory? क्या है डिफिकल्टी इसमें? सिर्फ 3 वर्ड्स तो रटने हैं. ऑफस्टे गुंडे, एल्वेटिलुंगे. एल्वेटिलुंगे मतलब स्टेज, ऑफस्टे मतलब यूथफुल, फाइन. ग्लिच फॉर्मिगे, एंडवेटिलुंग. एंडवेटिलुंग मीन्स अगेन स्टेज, ग्लिच फॉर्मिगे यूनिफॉर्म, और एब्स्टे गुंडे, एब्सेंट ऑफ upliftment, that is mature stage. Fine. Getting it? Understood, Penk? So why it was difficult? नहीं, क्यों डिफिकल्ट है? रिटर्न में भी नहीं, ये सब कुछ याद नहीं करना होता है. याद क्या करना होता है? कॉन्वेक्स स्लोप, अपलिफ्टमेंट ज़्यादा है. सी, जो मैं लिखा रहा हूँ एज इट इज़ लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए एग्जाम में. इफ़ यू ट्राई टू रिपीट द सेम लैंग्वेज, एनी ऑप्शनल विल बी डिफिकल्ट. हिस्ट्री विल ऑल्सो बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑप्शनल, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग करके यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. बट दैट ओन लैंग्वेज टू बी बिट साइंटिफिक, उसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए. फाइन. पेंक का नाम आना चाहिए, उसका स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं आया, फिर भी ये याद होना चाहिए कि रेशियो ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डाउन कटिंग में. Getting it? So this should be the exactly ये नहीं, इसमें आइडेंटिफाई करो what are the keywords. These are the notes, these are not the answers. Answers will be much shorter than the notes. So in that you will have to
remove many of the points which are not required. Positives of PENC. PENC has correctly introduced the time independent series, the time independent process of landform development, the time independent process of landform development, in which he correctly pointed out that landform is an outcome of relationship between upliftment and erosion. But don't write erosion, denudation. Landform is an outcome of relationship between outcome and erosion or denudation. Upliftment and denudation. Landform is an outcome of relationship between upliftment and denudation. Next paragraph, but same point. Thus he removed the difficulties created by Davisian cycle. Thus he removed the difficulties created by Davisian cycle. Difficulties created by the Davisian cycle. Second point. क्या है नेक्स्ट पॉजिटिव? अपलिफ्टमेंट रैपिड नहीं है, मतलब क्या है? स्टैटिक है या स्लो है? इज द अपलिफ्टमेंट स्लो शोन बाय प्लेट टेक्टोनिक्स? कंटिन्यूअस प्रोसेस है अपलिफ्टमेंट या इट इज वेरी रैपिड? सो he pointed out that upliftment is a slow continuous process. This has been validated or proved by plate tectonic theory. This has been validated or proved by the plate tectonic theory. थर्ड पॉइंट, एक ही पॉइंट है, ये ट्रिक्स होता है आंसर लिखने का, फाइन, मेरिट्स ज़्यादा नहीं है. क्रिटिकली एनालाइज पेंक आया तो ही ये लिखना है, इतना. क्या ट्रिक होता है? आई नो पेंक के बेनिफिट्स क्या है कि ही इज अगेंस्ट डेविस का इंडिपेंडेंट सीरीज. he proved that landform is time independent, comma upliftment is continuous process and erosion and upliftment goes on simultaneously. ऐसे याद करना होता है एग्जाम के लिए. 3 पॉइंट्स है मेरिट. एग्जाम में लिखना होता है एक एक पॉइंट निकाल के. हाँ, उसने डेविस को क्रिटिसाइज किया, टाइम इंडिपेंडेंट. उसने दिखाया अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली विच इज शोड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स. उसने ये बताया कि अपलिफ्टमेंट इज वेरी स्लो प्रोसेस विच इज अगेन शोड बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स. दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग इन द एग्जाम. पढ़ते समय इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है. पढ़ते समय कीवर्ड्स क्या किया उसने? 3 पॉइंट्स. फाइन. If you see, imagine if we try to match the language of Savindra Singh, will you be able to reproduce in the exam? No. So if you are reading NCERT, Lakshmikant, Spectrum, what you remember? Keywords. You remember गांधी जी ने वहाँ टोल्स्टॉय फॉर्म खोला था, फास्ट एंड टू डेथ किया था.
फाइन, सत्याग्रह किया था और आंसर लिखते समय लिखते हो कि गांधी जी कंसेप्ट ऑफ अहिंसा स्टार्टेड फ्रॉम दिस दिस दिस। तो यही है ऑप्शनल के लिए भी कि हाँ पेंक ने ये 3 चीजें कही थी, खुद के लैंग्वेज में लिखना है। इट इज नॉट गोइंग टू सेम लैंग्वेज विल नेवर कम, बट की पॉइंट्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ आना ही चाहिए आंसर में। आर्टिकल 21 टॉक्स राइट टू लाइफ, सो की पॉइंट एब्स्टे गुंडे आना ही चाहिए आंसर में, ग्लिच फॉर्म के आना ही चाहिए। जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट्स, नॉट ईच एंड एवरी पॉइंट। फाइन। थर्ड पॉइंट, he shows that erosion and upliftment is simultaneous process. Erosion and upliftment is simultaneous process. And therefore Penk's model is more practical and closer to the reality. Penk's model is more practical and closer to reality. And closer to the reality. फाइन। सो 3 मेरिट क्या क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट, अपलिफ्टमेंट, इरोजन साइमल्टेनियसली। फाइन। डीमेरिट्स, क्या है डीमेरिट? Water as a only agent, the same thing. See, are they anyways Davis or Penk talking कि नहीं limestone का rock is only eroded, basalt is not eroded? Are they talking anything? No. So all these thinkers, all these geographers have avoided the structure. डेविस ने तो डायरेक्टली कहा कि मेरे लिए स्ट्रक्चर प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट है, यूथ मैच्योर ओल्ड एज। इसने डेविस को क्रिटिसाइज किया, ही क्रिटिसाइज डेविस की ओवर एम्फोसिस ऑन टाइम। देन ही शुड हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऐसे इरोड होगा, इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर तो ऐसे इरोड होगा, ऐसा कुछ नहीं। जरूरी नहीं कि स्लोप रिप्लेसमेंट विल टेक। सपोज इफ दिस इज अ माउंटेन एंड दिस माउंटेन का अप नीचे का पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड ऊपर का पार्ट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, limestone will be easily eroded. There will be no slope replacement because there is no slope. So all these theories have avoided the structure. Second thing before I forget, you by geography and you, कौन सा issue? Give me a minute. You buy a issue landforms in India. मतलब आई गेस पहली बार ऐसा इतना अच्छा इशू आया है ऑफ Geography and You magazine. There is a magazine known as Geography and You. उसमें there will be different issues, but you buy the issue landforms in India. वो है इशू March 1 to 15, 2019. March 1st to 15th. Bi-monthly magazine है. Because this issue landforms in India is, you can see, is geomorphology special. मतलब it talks about the entire geomorphology of India. So इसमें क्या क्या है? Fluvial geography of India. First, fluvial geography of India, fluvial geomorphology, classification of Indian rivers,
Life cycle of a Indian rivers, मतलब Davis, youthful stage, mature stage, old age, braided channel. Second is karst topography in India, karst cycle of erosion. Third is, then I'll tell you इसमें से कौन से ये करने हैं. Basalt topography in India, Lonar Lake, interior of the earth, desert landforms of India, sand dunes, etc. सब कुछ properly दिया है. What is a Roche mountain? What is a crag and tail topography? Coastal geomorphology नहीं पढ़ना है हमें properly. Atolls of Lakshadweep, corals of India. Badland topography in India, typical question है, direct badland topography in India and उसका extent. Barren Island पे एक special article. Tombolo of India, Adams Bridge क्यों बना? Hot springs in India. Human induced subsidence of a land due to excessive groundwater. This will come only as a point. If you draw excessive groundwater, the land will subside. And most important, evidences of Pleistocene ice age or Carboniferous ice age in India. That is ice as a agent of change. Whatever we have covered, you get here along with the photos and India ka examples. And then there is one article regarding the poles. Where they have given you if anybody wants to read extensively, they have given you the book list also. Fundamentals of Geomorphology, Richard John Huggett. Urban Geomorphology, Crickmay, Thornbury. जिनके हम नाम लिखते हैं, you are not supposed to buy those books. वैसे you won't buy also because Fundamentals of Geomorphology is US dollar 416 rupees. कौन buy करेगा US dollar 416 rupees? And but buy this magazine, it will come for 60 rupees. March issue, landforms in India. Just या किसी को buy नहीं करनी है, you can just download it. Google PDF, Telegram पे तो ऐसे ही मिल जाएगी. You can see this. So, mine is Maxter. I cannot download it. मेरी Telegram वाली नहीं, original है, buy की है, subscription वाली है. Fine. So demerits पे, see, nobody of these geographers are talking about the structure. Fine. So first demerit. His emphasis was only on the upliftment and erosion. His emphasis was only on upliftment and erosion. But he ignored the structure of the landforms. He ignored the structure of the landforms. Second demerit, जो सबसे important demerit है, his style of writing is too difficult or complex, which makes his theory difficult for average academic person. And hence his theory does not have, average academic person means academics में जो normal लोग है, इसका ये मतलब नहीं है कि average दिमाग से, fine, जो normal लोग है, his theory is not easy for them to understand. And therefore his theory could not have the following like Penck, could not have the following like Davis. His theory could not have the following like Davis, even though it was technically correct.
even though it was technically correct. अरे ये नहीं ठीक है, फिर बाद में ले आना योजनाओं से. थर्ड पॉइंट, faulty translation in English by the followers of Davis. Faulty translation in English. हाँ ये सच्चाई है. डेविस ने फॉलोअर्स ने by the followers of Davis made his theory more complex and misunderstood, and it was misunderstood. कंक्लूजन क्या लिखोगे? नहीं, and he end process he's already said crystal stability will take long time. So end में even Himalayas will become plain. He does not say which time. He says it depends upon the tectonic activities. What can be the conclusion? Conclusion is the Peng school, the Peng cycle introduced the concept of slope replacement, comma, change the idea regarding the relationship between upliftment and erosion. Change the idea regarding upliftment and erosion. Full stop. The cycle would have been much universal and easily followed if the language would have been English, a German language थी, Germany, and secondly, if the faulty translation would have been avoided, or if the faulty translation would have been avoided. एक चीज याद रखना सिर्फ कि ये अगर आंसर में यूज कर सकते हो तो यूज करो. डेविस के फॉलोअर्स ने ये दुनिया को बताया कि पेंग बिलीव्स इन पैरेलल रिट्रीट. उसने लिखा है स्लोप रिप्लेसमेंट. अब जो देख रहा है साइकिल को, ही इज लुकिंग एट कहां पे पैरेलल रिट्रीट, तो है ही नहीं. फाइन. In fact, if you read properly the Davis का translation, the English translation of Peng, conclusion ये है कि Peng cycle is wrong because he had gone mad due to the wounds on the head which were inflicted during the World War. इतना पर्सनल अटैक किया था, एंड ये लाइन सविंदर सिंह में भी दी है. फाइन. सो दिस इज हाउ एंग्लो कोल्ड वॉर एरा है. जर्मन वर्सेस यूएसए, English versus other language.
So one statement here. It is the English translation. It is the English translation which shows that Penck believes in both parallel retreat and slope replacement. Penck believes in both parallel retreat and the slope replacement. Tell me the comparison between Davis and Penck. 1 point each. First, what? Upliftment and erosion. ये किसका? See, comparison, अभी आपको कुछ पता नहीं. Just write here D. Just write here Penck. फिर उसका क्या है? Upliftment and erosion. फिर सोचो कि यहाँ पे इसने क्या कहा है? रैपिड अपलिफ्टमेंट और नहीं, अपलिफ्टमेंट स्टॉप्स. सेम पॉइंट. रैपिड अपलिफ्टमेंट इज अ डिफरेंट पॉइंट. ही बिलीव्स इन रैपिड अपलिफ्टमेंट, ही बिलीव्स इन स्लो एंड लॉन्ग कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट. देन इसमें द फोकस इज ऑन टाइम. इसमें द फोकस इज ऑन which gives slope to the landform, and the slope will determine the energy of the river. Right? Convex slope, more energy. Concave slope, less energy. Fine? इसमें ऐसा कुछ नहीं है. Any other difference? Peneplain and एंड्रम. पेनेप्लेन को आगे कैसे? मोनाड नॉक्स. क्या है मोनाड नॉक्स? राउंडेड हिल्स. इसमें इंसलबर्ग्स. हाउ दे आर? शार्प. वन मोर पॉइंट. नहीं, लैंग्वेज वो बहुत ही इंग्लिश जर्मन ऐसे नहीं. Yes. Yes, he believes in sequence like humans. Sequence. ये कहता है ऐसा कुछ नहीं. It all depends upon ratio. टाइम का ही हो गया. मैं सिर्फ पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ. लिखते समय 3-4 पॉइंट्स हम क्लब करेंगे. और एक मेन पॉइंट, लैंडफॉर्म कैसे कम होते जा रहा है, बाय विच प्रोसेस इन डेविस एंड बाय विच प्रोसेस इन पेंक. किस कैसे हाइट कैसे कम होती जा रही है इन डेविस? वर्टिकल डाउन कटिंग. एंड इसमें हाइट कैसे कम होती जा रही है? स्लोप रिप्लेसमेंट. इसलिए स्लोप हैज 2 फैक्ट्स, दैट इज बॉस्चंग एंड हैडल. ऐसा कुछ नहीं है इधर. राइट? सिमिलैरिटीज. बिकॉज द क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता कभी भी, वेदर इट इज जीएस, वेदर इट इज ऑप्शनल, कभी डिस्टिंग्विश नहीं पूछता. हमेशा कंपेयर पूछता है. कंपैरिजन में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एंड सेम फैक्टर आल्सो ऑलवेज. So your answer should be more matured. Distinguish अगर होता तो we would have written like this: Davis, Penck, slope replacement, vertical down cutting. Second point ऐसे नहीं है. Fine. So similarities है कि दोनों have divided into 3 stages. So though Penck does not believe in the stage, but his theory has some thing which is similar to Davis. Youth mature, इसने भी 3 stage का है.
Secondly, both of them apply to the humid temperate regions. Factor responsible is which river? Yes, that is humid temperate region. That is the comparative analysis of Davis and Penck. Conclusion, किसको criticize करोगे? You are going to be a bureaucrat. You are never going to criticize anyone. Fine? You will be very, very good in the language. Language is important. किसी को हड़काओगे नहीं. Fine? You have to be always like Buddha. ये भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है. सब अपने अपने तरीके से right है. So conclusion, though Davis का some concept were full of errors, but his theory is simple to understand because Davis had Appalachians in mind, while Penck had Alps and Andes in mind. Andes भी, क्योंकि Penck गया था Andes में study करने के लिए. Fine? So Andes and Alps क्या है? Youthful mountains. ये uplift भी हो रहा है and they are getting eroded also. So obviously his theory is talking about that. And Davis ने क्या देखा है? Appalachians, old fold mountains, they are not getting uplifted. So उसने कहा upliftment हो गई. अब सिर्फ they are getting eroded. It's all the perspective of where these people were. See, imagine 1990s, 1920s or 1890s were not the era of satellites. फास्ट कम्युनिकेशन, फ्लाइट लेके यहाँ से वहाँ पहुँच गए, स्टडी किया, कंप्यूटर्स पे ये किया, कुछ नहीं था. इट्स ऑल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. राइट? गेटिंग इट? और ये क्वेश्चन कितने बार आया है? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेविस एंड पेंक कम से कम 5 से 6 बार. फाइन? बट मैं थोड़ा चेंज करूंगा अब इसको, आंसर्स को. यू विल रियलाइज द पॉइंट्स. कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेविस एंड पेंक. पॉइंट नंबर 1, Davis approach is from the view of geomorphologist, while Penck is from the view of geomorphologist. कल मैंने बताया था geomorphologist, while Penck का approach is from the geologist point of view. So obviously which will be easy for understand? जो बताएगा geomorphologist. Fine, no need of writing that. We'll take that as a different point. From the geomorphologist. Second, upliftment. Subheading upliftment. क्या लिखोगे इसमें? In the Davis, upliftment is short-lived and upliftment stops. In the Penck, upliftment and erosion goes on simultaneously. So Davis believes in short upliftment, short period of upliftment, short period of rapid upliftment, full stop. Erosion starts once the upliftment is complete. Erosion starts once the upliftment is complete. While Penck believes that upliftment and erosion goes on simultaneously. Upliftment and erosion goes on simultaneously. Upliftment and erosion goes on simultaneously. Whose diagram I have made? Davis या Penck? Davis.
So draw the diagrams. दोनों diagram आने चाहिए. बस एग्जाम के लिए इवन इफ यू ड्रॉ दिस मच इट इज फाइन. Can I continue? Next point. According to Davis, landscape is a function of structure, process and time. According to Davis, landscape is a function of structure, process and time. Thus, though Davis gives overemphasis on time, he also recognizes the structure and the processes.
he also recognizes the structure on the processes. Fine. On other hand, according to Penck, landscape is an expression of phase and the rate of upliftment. Landscape is an expression of phase and the rate of upliftment. Phase and the rate of upliftment in relation to the rate of denudation or degradation. In relation to the rate of denudation or degradation. In relation to the rate of denudation or degradation. कहीं मेंशन है स्ट्रक्चर का इसमें? प्रोसेस दोनों ने रिकॉग्नाइज किया है, रिवर है, इसने टाइम स्ट्रक्चर प्रोसेस तीनों की बात की है, पेंक ने स्ट्रक्चर की बिल्कुल भी बात नहीं की थी, इसलिए हमने लिखा भी है शायद नेगेटिव में, ही हैज नॉट गिवन द स्ट्रक्चर. सो दस द पेंक no same, thus the Penck does not give importance to the structure of the landforms. Does not give importance to the structure of the landforms. Does not give importance to the structure of the landform. डेविस की थियरी किस से शुरू होती है? कौन से लैंडफॉर्म से? क्या है उस लैंडफॉर्म का नाम? प्राइमा रम्फ. पेंक की थियरी कहां से शुरू होती है? प्राइमा रम्फ से. डेविस की थियरी कहां से शुरू होती है? कहीं लिखा है? नहीं. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. According to Davis, landform development can start on different structural units. Landforms development can start on different structural units. But Penck's model starts on convex low lying land or lowland, convex lowland known as prima rumpf. ये एक नेगेटिव है, पर हमने जानबूझ के बहुत सारे नेगेटिव्स लिखे नहीं हैं. जरूरी नहीं प्राइमा रम्फ इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. हिज थियरी शुड स्टार्ट ऑन प्राइमा रम्फ. नेक्स्ट पॉइंट. द एंड प्रोडक्ट इज पेनेप्लेन. The end product is peneplain, which is formed due to which erosion? Vertical erosion. And can I write a new word for vertical erosion, that is down wasting? कैसे वेस्टिंग मतलब लैंड टूट रही है, कैसे टूट रही है? नीचे की तरफ. वर्टिकल इरोशन. और ये इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आवर न्यू टॉपिक इज गोइंग टू बी स्लोप डेवलपमेंट. उसमें ये वर्ड्स पता होने चाहिए. वर्टिकल इरोजन मतलब डाउन कटिंग या डाउन वेस्टिंग. एंड प्रोडक्ट इज पेनेप्लेन विच फॉर्म्स थ्रू वर्टिकल इरोजन और डाउन वेस्टिंग. While in the Penck, the end product is, what is the end product? End rumpf, which is formed due to
which is formed due to what? Slope replacement. Which is formed due to slope replacement. कौन सा slope? Concave slope will replace convex. Concave slope will replace convex. नीचे से ऊपर. Slope replacement. So new word for you is, what is this slope replacement known as? Back wasting. Down wasting, down cutting. Back wasting, slope replacement. पीछे 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 it is going. Next point. The peneplain are covered by low rounded hills known as monadnocks. While end rump are covered by sharp low hills known as Inselbergs. Next point. In the Davisian theory, slope development or slopes do not occupy an important place in the landform evolution. Slopes do not occupy an important place in the landform evolution. कहीं हमने पढ़ा डेविस से पहले कि स्लोप्स कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्केव, पर ये कहाँ पे पढ़ा हमने? पेंक में. That is why slopes do not occupy an important place in the evolution of the landforms. But the Penk's theory is created by slopes. In which initial convex slope is replaced by concave slope. Next point. In the Davis, landform development is sequential. The landform development is sequential. But in the Penk, the landform development does not show any sequence. See, remember, अगर डेविस पेंग को जाके पूछा यूथफुल स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, वो बोलेगा टेल मी द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट वर्सेस इरोजन. उसके ऊपर देयर इज अ स्टेज. इसको अगर पूछा तो वो कहेगा हाँ यूथफुल स्टेज अभी ऐसा है, बाद में मैच्योर है, बाद में. बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज. नेक्स्ट पॉइंट. बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज
That is, in both Davis and Penck, in both Davis and Penck, river is the most important agent. River is the most important agent, though Penck's theory is applicable to different geomorphic processes also. Though Penck's theory is applicable to different geomorphic processes also. Penck's theory is applicable to different geomorphic processes also. रिमेंबर, पेंक कहीं नहीं कहता ये सिर्फ रिवर से, इसलिए पेंक की थियरी इज एप्लीकेबल इवन टू डेजर्ट्स, इट्स एप्लीकेबल टू मेनी रीजन्स. नेक्स्ट पॉइंट, though Penck does not specify, cyclic change in the stages of youth, maturity and old age, cyclic change in the stages of youth, maturity and old age, still they are similar to the stages of, still the phases of Penck, कौन सा phase? Development, stage of development, Hofstede are similar to the Davisian cycle, Thus, according to Chorley, conclusion, according to Chorley, खुद मत कोट करो, ये लाइन तभी लिखो जब को चोरले को मेंशन करोगे. फाइन, अकॉर्डिंग टू चोरले, बिकॉज ये लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल है इसलिए. Penck's cycle is an extension of Davis rather than alternative of Davis. Penck's cycle is an extension of Davis rather than alternative of Davis. Can I say Penck का is improved version of Davis? थोड़ा जो negatives है, so that is what Chorley is saying. It is an extension of Davis rather than alternative of Davis. But ये controversial line है, इसलिए I am saying quote Chorley in it. Don't quote on your own. कि thus according to me, he may get offended, or thus we can conclude नहीं. Thus Chorley concludes that this is an extension of Davis. 3-4 ही नाम याद रखने हैं. Kober, which theory? Geosyncline. एरियन प्रैट, आइसोस्टेसी. कंक्लूजन उसका होम्स के साथ, हमेशा आइसोस्टेसी का कंक्लूजन होम्स के साथ. डेविस पेंक किसी का भी इंट्रोडक्शन यूनिफॉर्मिटिज्म के साथ, हटन, एंड इनका दोनों का कंक्लूजन चोरले के साथ, बिकॉज चोरले इज अ बायोग्राफर ऑफ डेविस. ये भी बता देता हूँ. सो खुद जिसकी बायोग्राफी लिखी है उसके बारे में क्यों गलत लिखेगा. फाइन, पेंक की किसी ने बायोग्राफी नहीं लिखी. So Chorley कहता है it is an extension of Davis. If you remember, I have given you an introduction. Can I call this cycle of क्या, peneplain, pediplain and rumph? Pediplanation.
Fine. Background, no need of writing, understand. King was an African geomorphologist. So in African savanna, he saw two things. एक तो river is not important. दूसरा, mountains are sharp. That is, there are no rounded tops. And therefore उसने कहा, डेविस तू गलत है. क्यों गलत है? पेनेप्लेन तो मेरे इधर है ही नहीं, रिवर तो मेरे इधर है ही नहीं पेनेप्लेन बनाने के लिए. सो उसने फिर पढ़ा पेंग को. पेंग ने कहा राउंडेड टॉप्स होना चाहिए. सो उसने दिया अपना ओन थियरी विच इज नोन एज द थियरी ऑफ पेडिप्लेनेशन. अंडरस्टैंड. अब वो कहता है इन द इनिशियल स्टेज देयर विल बी अ माउंटेन. This mountain will start getting eroded vertically. So vertical erosion is down cutting. So thus the height of the mountain will start getting eroded. Then this mountain will start developing slopes, and the slope will be convex, freeze cap, rectilinear, concave. Convex, freeze cap, rectilinear, concave. So entirely this mountain, ये जो माउंटेन है, इट विल बी कन्वर्टेड इन दिस मैनर. फाइन. इनिशियली कैसे कन्वर्ट हुआ? वी शेप. वंस द वी शेप वैली इज फॉर्म्ड, दिस वैलीज विल स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स एंड ऐसे बनेगी. अब ऐसे बनाने के लिए वी शेप वैली से तो बन नहीं सकता. आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी क्रूड अंडरस्टैंडिंग. वी शेप वैली उसने कहाँ से कंसेप्ट उठाया था? डेविस से. अब उसको रियलाइज हुआ कि वी शेप से तो मैं ये शेप नहीं दे सकता. तो उसने कहा इनिशियली देयर विल बी डाउन कटिंग. डाउन कटिंग जब स्टॉप हो जाएगा तो देयर विल बी स्लोप रिप्लेसमेंट. स्लोप रिप्लेसमेंट उसने कहाँ से उठाया? पेंग से. सो इनिशियली डाउन कटिंग से कोई भी स्लोप विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्वेक्स, रेक्टिलिनियर, फ्रीज कैप, रेक्टिलिनियर, कॉनकेव. फाइन. उसको कैसे पता चला ऐसे होना चाहिए स्लोप्स? बिकॉज कोई भी स्लोप हैज 4 पार्ट्स वाज गिवन बाय वुड. सो ही टुक द एलिमेंट्स ऑफ स्लोप फ्रॉम वुड. हिज फर्स्ट स्टेज इज डेविस, हिज सेकंड स्टेज इज पेंक. सो वंस दिस स्लोप स्टार्ट्स फॉर्मिंग, देन ये स्लोप पीछे जाएगा और ऐसे जाएगा. ये स्लोप ऐसे बनेगा. सो ये गायब हो गया. फाइन. ये सब इरेड हो गया. अब ये स्लोप ऐसे नीचे आएगा, ये स्लोप ऐसे नीचे आएगा, ये स्लोप ऐसे नीचे आएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग? पैरेलल रिट्रीट, which is nothing but an improved version of slope replacement. This is what is a king. That is why king का criticism बहुत है. It is not at all original. It has no scientific evidence. It is rejected. Nobody studies king properly. क्योंकि उसकी थियरी में कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकल बेसिस. उसने अपने हिसाब से जैसे बनानी है वैसे थियरी बनाई. क्योंकि उसने देखा मुझे कुछ भी करके ये लाना है. तो कभी रिवर को लेके आ रहा है, कभी विंड्स को लेके आ रहा है. हाँ, उसका एंड स्टेज पे था फोकस. दैट इज वाई किंग इज नॉट. कितने बार पूछा है किंग? ओनली वंस. वो भी क्या क्वेश्चन पूछा है? कभी नहीं पूछा है किंग साइकिल ऑफ पेडिप्लिनेशन. उस यूपीएससी ने ये पूछा है इन गिविंग द थियरी किंग कंबाइंड हिज आइडियाज विथ डेविस, पेंक एंड वुड. सो कैंसर में क्या लिखना है? वुड से क्या लिया उसने? elements of the slope, vertical erosion and then slope replacement. And his own idea slope replacement को उसने कह दिया parallel retreat. Getting it? Fine. Initial इसमें due to mountainous regions
the winds will be stopped and there will be reverse. Height, because it is not a humid condition, इसलिए rivers will be not that much active, winds will be active, इसलिए the stones will be dry, hence the stones will not break into small pieces, बड़े बड़े stones रहेंगे and बड़े बड़े stones direct block करके नीचे गिरेंगे, इसलिए free scrap. Free scrap is possible only if the stones are, which are sediments which are falling are big. कभी ऐसे कब होगी खाई, वी शेप्ड वैलीज में तो नहीं होगी. बड़ा पत्थर टूट के नीचे गिर गया, क्यों गिरा? पानी अंदर से चला गया क्रैक्स में, और ये सिर्फ हो सकता है इन द डेजर्ट्स. अंडरस्टैंडिंग? कुछ नहीं समझ में आया, क्या लिखना है आंसर? पैरेलल रिट्रीट और डेविस दोनों का कॉम्बिनेशन है. कैसे डेविस का? उसने भी कहा 3 स्टेजेस है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज. देखो किंग पहले क्रिटिसाइज करता है डेविस को कि यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज में नहीं, और उसकी खुद की थियरी में देयर इज अ यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड एज. क्रिटिसाइज करता है कि रिवर्स सिर्फ टेम्परेट रीजन्स में, और उसकी खुद की थियरी में क्या है? रिवर्स. और कहाँ पे अप्लाई करता है? सवाना में, जहाँ रिवर्स नहीं है. एंड देयरफॉर किंग इज not a big this thing. So king cycle of erosion, this cycle of erosion was given by L.C. King, who was trained in Davisian geomorphology. ये खुद पढ़ाई से इसने डेविस का फॉलोअर था. Who was trained in Davisian geomorphology by कॉटन. ये इंट्रोडक्शन रट लो, मीन्स थिंकर्स के नाम आने चाहिए आंसर्स में, कि डेविस का गुरु कौन था? कॉटन. कॉटन किसके स्कूल को फॉलो करता था? डेविस को. नेक्स्ट पॉइंट, हिज थियरी tries to explain the landscapes in Africa. His theory tries to explain the landscapes in Africa, Arabia, मतलब West Asia, and Australia. Which the Davisian cycle could not explain adequately. Which the Davisian cycle could not explain adequately. I'll tell you King ka journey. King was born in New Zealand. From New Zealand he came to Africa to work in a mine. वहाँ पे उसको कॉटन मिला. He started studying geography under cotton. So obviously उसका initial impact कौन था? Davis. Cotton was a follower of Davis. After working and roaming in different parts of the world, he went to Australia. ऑस्ट्रेलिया में उसको मिला ड्यूटॉइट, DUTOIT, जिसने दिए थे एविडेंसेस फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिग्सॉ फिट और सब मैंने आपको बहुत पहले बताया था. ड्यूटॉइट था फॉलोअर ऑफ पेंक. फिर किंग पेंक को पढ़ने लग गया. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय पेंक
इसलिए हिज थियरी इज डेविस एंड पेंक। सिर्फ वो पेंक की एक बात में नहीं मानता था, ही डिड नॉट बिलीव इन रैप upliftment is a continuous process. He, like Davis, believed in short of upliftment, short but rapid upliftment. क्यों? क्योंकि किंग था इन द सदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका में सारे जो माउंटेन्स है ओल्ड है। एटलस जो अपलिफ्ट हो रहा है इट इज इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। वहीं वहाँ कहीं गया ही नहीं कि देखने के लिए कि हाँ अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली। गेटिंग इट? सो दैट इज वाई जो जहाँ पे है उसने वो थियरी दी। बहुत सारे हैं। एटलस, यंगफोल्ड माउंटेन्स, ड्रैकेंसबर्ग, ब्लैक माउंटेन, माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, ये सारे ओल्ड माउंटेन्स है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन एंड द ब्लैक माउंटेन, जिसको कहते हैं टेबल टॉप माउंटेन। ये सारे ओल्ड माउंटेन्स है। So next point, King was also influenced by Penck. But did not believe in his concept of relationship between upliftment and erosion. See, look here now. If this is the mountain in Africa, fine. If there is any fold mountain Africa, दो टाइप्स के माउंटेन्स है विच आर वेरी हाई, जहाँ पे ग्लेशियर्स है, और द नॉर्मल माउंटेन्स इन द अफ्रीका विच इज द डेजर्ट रीजन. देर इज अ समटाइम्स वेरी वेरी हेवी रेनफॉल, एंड बिकॉज ऑफ वेरी हेवी बिकॉज ऑफ अ वेरी हेवी रेनफॉल जो माउंटेन्स के क्रैक्स है इसमें से वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग. When the water starts flowing, there is a lubricating action. मतलब water will flow through the gaps, and as a result of this यहाँ पे lubrication जैसा काम करेगा. And because lubrication जैसा काम करेगा, so as a result of this ये जो mass है, पत्थर है, initially hot है, it is in the expanded state. Suddenly rainfall के बाद it contracts, so वो टूटता है, और टूट के वो कहाँ गिरता है? नीचे, और नीचे सेडिमेंट्स फॉर्म होता है. सो द सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन. फुट ऑफ अ माउंटेन इज नोन एज पेडीमेंट. सो किंग बिलीव्स कि माउंटेन से ये टूट टूट के हाइट ऑफ द माउंटेन्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग बिकॉज द सेडिमेंट्स टूट टूट के कहाँ ये होते हैं? एट द फुट. And therefore वो कहता है his cycle is pediplanation. थियरी तो आपको समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंड उसके पीछे का लॉजिक्स. Why that cycle is pediplane? He gave the name pediplane. फुट से पूरा प्लेन बन गया. फाइन, माउंटेन से पूरा प्लेन बन गया. Who's Davis? Why this is peneplain? Why it is a peneplain? Davis. Peneplain means plain area, a flat area. Why it is a pediplane? Because जो mountain था, it has now become plain with some inselbergs. अब how this mountain is getting into plain? पहले this was the height of the mountain, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, and then last बाकी का sediments are broken down. So this original mountain which was this big is now converted into this mountain.
So what is happening if I ask you, can I say height of the mountain is declining? Right? So he believes pediplanation is formed due to scrap, means uppermost part of a mountain, वो कम होते गया. So what is that is scrap retreat. Or how it is coming down? Parallel retreat. क्यों नाम है parallel retreat? Why the name is scrap retreat? Understanding? Why the name is cycle of pediplanation? ये माउंटेन्स टूट गए वेदरिंग के कारण, फिजिकल वेदरिंग के कारण. टूटा हुआ पार्ट ऑफ द माउंटेन इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन. Obviously, जब वो बड़ा rock is broken, when it falls down, it gets broken into pieces. So sediments are formed by accumulation of the sediments where at the foot of a mountain. In English, pediment or pedimont. Pedi मतलब foot, ment और mont मतलब mountain. Pedicure क्रीम का नाम है, foot के क्रीम का नाम. Pedi मतलब foot. So foot of a mountain, pediment. Pediment कम होते गया, therefore he called this pediplane. Mountain has got converted into plain. कैसे? Mountains का height कम होते गया. So scrap retreat or parallel retreat. Getting it? Understanding? Slope replacement. 3 चीजें याद रखो. Vertical down cutting, easiest. Slope replacement, and up parallel retreat. Any doubts here? Is it becoming heavy? Fine. So king believes that there is a uniform development of landform. There is a uniform development of landform in different environmental conditions. In different environmental conditions. देखो वो क्या कहता है. कोई भी कंडीशन हो एनवायरनमेंट का, उसमें सब लैंडफॉर्म्स विल बी यूनिफॉर्मली डेवलप्ड. ग्लेशियर में भी यही होगा, विंड्स में भी यही होगा, रिवर्स में भी यही होगा. सी पेंक वाज क्रिटिसाइज्ड कि ही इज एप्लीकेबल ओनली टू द रिवर्स. डेविस वाज क्रिटिसाइज्ड ही इज एप्लीकेबल ओनली टू द रिवर्स. सो इसने क्या किया, उसने कहा सब जगह ऐसे ही शुरू होगा, सो दैट हिज साइकिल बिकम्स यूनिवर्सल. ऑब्वियसली इट इज नॉट ट्रू. ग्लेशियर्स में अलग होगा लैंडफॉर्म, बट ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है. हर जगह यही होगा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट. उसको पूछा क्यों, तो वो कहता है हर जगह पहले डेजर्ट्स थे, फिर बारिश आनी शुरू हो गई. सो कोई भी माउंटेन बना है वो डेजर्ट्स के कारण बना है, जो हम एग्जाम में लिखते नहीं है. जैसे जैसे माउंटेन्स बढ़ते गए, क्लाइमेट चेंज होता गया, तो बारिश आती गई. बट हर जगह पहले मेरे जैसा ही क्लाइमेट था जो अफ्रीका में. टू मच इन्फ्लुएंस. ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीका, सो उसको लगा कि इवन क्लाइमेट हैज इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीका. फाइन. सो जो अफ्रीका में आज क्लाइमेट है वही पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट है. यू सी हिज नेक्स्ट लाइन. There is insignificant influence of climate changes. There is insignificant influence of climate changes in the landform development. He is saying there is insignificant influence of climate changes or climatic changes in the landform development. Understanding? जो मैं कह रहा हूं वो सच है. क्लाइमेट, ग्लेशियर, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही डेवलप हुआ है. फुल स्टॉप. द प्रोसेस by which landforms developed
by which the landforms developed. Landforms developed is by continuous retreat of hill slopes and such retreat is always in the form of parallel retreat. Such retreat is always in the form of parallel retreat. What is saying? Climate will have no influence. Then he gives his theory all over the world. ये स्लोप ऐसे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और ये बनेगा. Similarly, this slope, so what he calls this? Parallel retreat of a hill slopes. Fine. Retreat मतलब back wasting of hill slopes. So scrap retreat or parallel retreat. धीरे से in the king itself we are going to a new topic of our syllabus, slope development. Remember, slope development का answer for king and landform development का answer for king is same. You have to remember, Davis did not believe in slopes. Penck ने slope शुरू किया and now king का पूरा landform is in slopes. वो कहता है सब जगह mountain था, सब mountain कम हो गए parallel retreat, इसलिए plains plateaus बन गए. Right? So king, next point, king was inspired by wood. King was inspired by wood. Was inspired by wood was inspired by wood in the elements of the slope. In the elements of the slope. In the elements of the slope. मतलब king ने क्या कॉपी किया wood से? Slope. Now you can draw this diagram. I guess I have made you draw this diagram earlier. Can you make it? If you cannot, just make one side. Or you can just make one side also, ऐसा कुछ नहीं.
कितने टाइप के स्लोप्स है, एलिमेंट्स है 4. कौन सा है फर्स्ट? कॉन्वेक्स. क्यों होता है कॉन्वेक्स? ड्यू टू अपलिफ्टमेंट या डाउन कटिंग? अपलिफ्टमेंट. सो कैन आई कॉल कॉन्वेक्स स्लोप आल्सो एज वैक्सिंग स्लोप? लैंडफॉर्म इज गेटिंग अपलिफ्टेड. पेंक में वैक्सिंग स्लोप था. फाइन. सो फर्स्ट जो मैंने मार्क किया है, फर्स्ट वैक्सिंग स्लोप. Waxing slope. It is the convex segment at the top of the slope. It is the convex segment at the top of the slope. Associated with upliftment. Associated with upliftment. Second क्या है? Straight slope. Don't write straight slope. क्या है? Anything which is here, will it stay or will it fall down? So the second element 2 है ये, is what is known as free face. Free face. Free face. Free face is the cliff which is made up of bedrock. Free face is the cliff which is CLIFF, cliff. Cliff मतलब what? हिंदी में पहाड़ का जो चट्टान होता है, that is cliff. चट्टानी, नथिंग एल्स. जो पार्ट है पहाड़ का जो स्ट्रेट है, जिसको आप कहेंगे वो चट्टान, दैट इज क्लिफ. देखो वर्ड है क्लिफ इज द, क्या लिखा है मैंने? क्लिफ विच इज मेड अप ऑफ बेड रॉक. बेड रॉक क्यों? बेड रॉक मतलब ओरिजिनल रॉक. क्लिफ में अगर कोई भी सेडिमेंट्स टूट गए, विल इट रिमेन और विल इट फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी? फॉल डाउन, बिकॉज इट इज स्ट्रेट. सो इसलिए हमेशा व्हाट विल बी एक्सपोज्ड? द ओरिजिनल रॉक. देयरफॉर इट इज सेड दैट बेड रॉक. तो आगे लिखो. फर्स्ट टेक हिज थियरी, देन आई विल टेल यू क्या उठाना है कौन से आंसर में, बिकॉज दिस थियरी कैनॉट बी स्टडीड लाइक डेविस एंड पेंग इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है थियरी. The free face, due to the steepness of the slope, do not have any sediments. Does not have any sediments. It is a face that experiences parallel retreat. Third, डेब्रिस स्लोप. यहां से जो भी सेडिमेंट्स गिरेंगे वो कहां गिरेंगे? हियर. सो ये स्ट्रेट है स्लोप, बट जो भी सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं. सो वी विल कॉल दिस एज अ रेक्टिलिनियर और डेब्रिस स्लोप. हाँ नहीं, अंडरस्टैंड. ये स्ट्रेट है, कॉन्वेक्स है इसलिए टूटेगा, स्ट्रेट है इसलिए टूटेगा. फिर ये रेक्टिलिनियर है, यहाँ से टूट के कहाँ गिरेंगे? यहाँ पे. तो इसको हम कहेंगे डेब्रिस स्लोप. अब यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे? इफ देयर इज इनफ वेदरिंग तो इसके और टुकड़े होके यहाँ नीचे गिरेंगे. द सेडिमेंट्स विच फॉल हियर विल बी बिगर इन साइज. देन जब बारिश होगी तो दे विल बी फर्दर इरोडेड और वेदर्ड and they will broke into small pieces
and this small pieces will then fall down. Because these are falling down as small pieces, river can remove them, and because river can remove them, ये बन जाता है concave. कोई भी हिल में जाना, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू एनी हिल, ये चारों एलिमेंट्स मिलेंगे आपको. ये ऐसे फेस होगा, एक ऐसे होगा, और एक कॉनकेव होगा. कॉनकेव के पास हमेशा नदी होगी. अब रिवर इरोड कर पा रही है, नदी लेके जा पा रही है, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर नहीं है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं. तो छोटे बड़ा पत्थर यहाँ से गिर के यहाँ पे आया. अब ईयर्स में वेदरिंग के बाद वो सेडिमेंट बन गया, सेडिमेंट बनने के बाद वो नीचे गया, इसलिए ये कॉनकेव है. मतलब यहाँ पे भी सेडिमेंट्स रहेंगे बट वो बड़े होंगे, इसलिए डेब्रिस. डेब्रिस मतलब बिग सेडिमेंट्स. डेब्रिस स्लोप सब रॉक्स पे. डिपेंड करेगा. बसाल्ट इज अ वेरी strong rock in dry conditions, but in the wet conditions the same basalt becomes weak rock and is broken into small, जिसको हम कहते हैं black cotton soil. Basalt is not a very good rock in hot and humid conditions. It is a strong rock in dry conditions. Basalt, free face. Basalt, free face. उसके बाद रेक्टिलिनियर स्लोप नीचे, उसका फोटो नहीं दिया. ओनली डिफरेंस इज ये स्लोप है, दिस इज नर्मदा रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स रिफ्ट वैली. डेब्रिस स्लोप. Debris slope is not present everywhere. Is not present everywhere. It is present only in the regions which have free face. It is present only in the regions which have free face. It is present only in the regions which have free face. In the debris slope, the slope is straight. The slope is straight or constant or uniform. The slope is straight, constant or uniform. And hence it is also known as rectilinear slope. It is also known as rectilinear slope. Upliftment. जितना greater upliftment, उतना stronger is the free face. अब जितना free face, उतना more erosion and the big sediments will fall down. As the big sediments are falling down, they will start sloping. So rectilinear slope. In the rectilinear slope, बड़े बड़े rocks तब तक नीचे नहीं जाएंगे जब तक वो छोटे टुकड़ों में convert नहीं हो जाएंगे. So debris slope will stay, and debris slope में as you go up, rocks बड़े मिलेंगे, जैसे आप नीचे आते हो तो rocks छोटे छोटे होते जाएंगे, and फिर इतने छोटे हो जाएंगे rocks कि it will get converted into soil.
soil will be removed by the river, and इसलिए last का slope is washed slope. Wash क्यों? Water लेके गई. See, I don't know how many of you have gone to that region. Rudki, fine. हरिद्वार, ऋषिकेश. ऋषिकेश में जाओगे तो पत्थर बहुत बड़े मिलेंगे. That is the upper part of the rectilinear slope. रास्ता ऐसे जाता है. Have you ever gone from Haridwar to Rishikesh? So you are climbing. हरिद्वार के पास आओगे तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स मिलेंगे because that is the start of Great Plains. And रुड़की में पत्थर ही नहीं मिलेंगे. That is a wash slope of river गंगा. Fine. So ये बहुत बड़ा एरिया है. That is why we cannot understand. ये एक सिंगल माउंटेन नहीं है. It is a very big area. और ये top of a mountain, बद्रीनाथ, केदारनाथ, etc. बद्रीनाथ, especially केदारनाथ, to climb, you have to go through free face. इसलिए इतने ज़्यादा डेथ, steep slope है. So this is how the entire slope is. ऐसा नहीं कि single hill में जाके कल आपको दिखेगा. All these things. So this is केदारनाथ. This is उसका रास्ता right from जोशीमठ, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, and then उसके नीचे भाबर, उसके नीचे तराई. Waning slope is one which exhibits gentle concave profile. Profile. According to King, the waning slope is made up of fine rock material in the bracket soil or regolith. जब बहुत छोटे छोटे रॉक्स है तो रेगोलिथ, that is रेत, sand, fine rock material or regolith. So उसने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया? From wood. Fine. अब understand his theory. We are now writing the answer. Understood anything? Elements of the slope. अब जो क्वेश्चन है, that is the king combines the idea of wood, plank and this thing. Yeah, what is the wood's contribution to the king's theory? You will have to write this. He took the slope, and ये जो मैंने दिया है 5 elements of the slope, ये wood ने दिया था. अब king कहेगा कि this is destroyed by the vertical erosion. उसके बाद once this is destroyed, ये ऐसे ऐसे पीछे आएगा. फाइन. ये जैसे जैसे पीछे आएगा तो इसको हम कहेंगे पैरेलल रिट्रीट, और उसके बाद वो स्लोप रिप्लेसमेंट लगाएगा. ये स्लोप बढ़ते जाएगा, ये स्लोप बढ़ते जाएगा, ये स्लोप बढ़ते जाएगा. सो देयरफॉर हिज थियरी इज द थियरी ऑफ पैरेलल रिट्रीट. सो किंग्स थियरी. According to King, point number 1, according to King, each cycle begins with rapid rate of upliftment. Each cycle begins with rapid rate of upliftment, followed by
long period of crustal stability. Long period of crustal stability. Long period of crustal stability. किसने आइडिया, कहाँ से ली इसने आइडिया? रैपिड अपलिफ्टमेंट, उसके बाद अपलिफ्टमेंट स्टॉप्स. क्रिस्टल स्टेबिलिटी मीन्स अपलिफ्टमेंट इज स्टॉपिंग. सो कहाँ से ले रहा है? डेविस. फुल स्टॉप. डोंट राइट, बाद में हम क्रिटिसिज्म में लिखेंगे. द अपलिफ्टमेंट ऑकर्स, द अपलिफ्टमेंट ऑकर्स on previously formed पेडीप्लेन. वो कह रहा है अपलिफ्टमेंट किसकी होगी? पेडीप्लेन की. कहां से लिया आइडिया? पेंक. अपलिफ्टमेंट ओनली ऑकर्स ऑन प्राइमर रम्फ. ही इज सेइंग अपलिफ्टमेंट इज ऑकरिंग ऑन द पेडीप्लेन. फाइन. प्रीवियसली फॉर्म्ड पेडीप्लेन. नेक्स्ट पॉइंट. The cycle of pediplanation, the cycle of pediplanation passes through the stages of youth, mature and old age. Passes through the stages of youth, mature and old age. कहाँ से ले रहा है आइडिया फिर से? डेविस. कुछ भी ओरिजिनल नहीं है. यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज. एक पेंक का कंसेप्ट लिया, एक डेविस का लिया. दिस साइकिल इज परफॉर्म्ड बाय टू प्रोसेसेस. दिस साइकिल इज परफॉर्म्ड बाय ट्विन प्रोसेसेस और टू प्रोसेसेस ऑफ स्क्रैप रिट्रीट. आई टोल्ड यू व्हाट इज द स्क्रैप रिट्रीट, इसलिए मैंने पढ़ाया था. अंडरस्टूड व्हाट इज स्क्रैप रिट्रीट? हाइट ऑफ द माउंटेन विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्स. तो सेडिमेंट्स कहां पे गिरेंगे? फुट ऑफ द माउंटेन. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू प्रोसेस ऑफ स्क्रैप रिट्रीट एंड पेडिमेंटेशन. 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 पेडिमेंटेशन मतलब टूट के गिर रहे. यू शुड नो किंग की थियरी इज ऑल्सो नोन एज एपिजिन साइकिल ऑफ इरोजन. बाद में जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये डायरेक्टली आया है. एपिजिन साइकिल ऑफ इरोजन. यूथफुल स्टेज. यूथफुल स्टेज. In the youthful stage, take in points so that it becomes easy. There is rapid, in the youthful stage, there is rapid down cutting of valleys. Down cutting of valleys by the rivers. Due to the upliftment. Rivers due to the upliftment. उसका कहना है कि there has been upliftment. कोई भी रीजन हो, his theory is applicable. So जिस रीजन में upliftment हुआ वहाँ पे रिवर्स ओरिजिनेट होगी. रिवर्स ओरिजिनेट होने के बाद बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट देयर इज अ स्टीप स्लोप. सो रिवर्स विल फ्लो विद ग्रेट स्पीड and they will start actively down cutting. Getting it? Davis. This active down cutting will form gorge and canyons. Upliftment has stopped or is still going up?
stopped. So because the upliftment has stopped, will the slope now become more and more gentle? Right? So next point. Over the period of time, active down cutting will be slowed down. Active down cutting will be slowed down. And therefore, rectilinear slopes will be formed. Rectilinear slopes will be formed. Rectilinear slope मतलब which slope? थर्ड वाला. पहले एक्टिव डाउन कटिंग से वी शेप्ड वैलीज. वी शेप्ड वैलीज में हमेशा गॉर्जेस एंड कैनियंस. पहले तो कॉन्वेक्स स्लोप जहाँ जब तक अपलिफ्टमेंट हुआ, उसके बाद वी शेप्ड वैलीज, उसके बाद अब इट इज स्लोड डाउन, सो रेक्टिलिनियर स्लोप विल बी फॉर्म्ड. कोई लॉजिक नहीं है. डोंट थिंक कि ऐसे क्यों हो रहा है. फाइन, देयर इज नो लॉजिक इन इट. रेक्टिलिनियर वी शेप्ड वैली कहता है और कहता है कि ऐसे स्लोप बनेगा फ्रीज के. फाइन. फिर कहता है ये स्लोप ऐसे बन जाएगा. पूछा क्यों बनेगा? ही हैज नो आंसर. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट. By the late youth, the entire landform will be converted into steep hilly region, steep sided hills. Steep-sided hills known as Inselbergs. Known as Inselberg. कौन से यूथ स्टेजेस में इसके यूनसेलबर्ग यूथफुल स्टेज में ही बन गया. अब what he is saying, no need of again drawing this diagram. This is a landform. Fine. It has got uplifted. फिर rivers have started originating. Rivers have started cutting the landform. As the rivers have started cutting the landform, this landform is now getting converted into ये region, hilly region. फिर valley, hilly region. फिर valley, hilly region. फिर बीच में valley. So this hilly regions, that is entire this landform which was uniform, gets converted into hilly regions. And this hills के बीच में से rivers are going. So he will call this hills as Inselbergs. Getting it? अगर फिर से नहीं समझ में आ रहा है, the landform has uplifted. Because of this there are numerous rivers. These rivers are then cutting this landform. So due to cutting, downfolding नहीं हो रहा है. Just imagine कि cutting से पहले steep slope, फिर rectilinear slope and then बन गए इंसेलबर्ग्स. क्यों अचानक उसने इंसेलबर्ग बना दिए? क्योंकि उसको जब तक वो इंसेलबर्ग नहीं बनाएगा तब तक पैरेलल रिट्रीट हो नहीं सकता. उसको क्या प्रूव करना है? पैरेलल रिट्रीट. नेक्स्ट. Mature stage. In the beginning of mature stage, the beginning of mature stage is characterized by absence of valley deepening, and the start of lateral erosion, that is widely widening.
Start of lateral erosion, that is valley widening. Lateral erosion, that is valley widening. Don't draw again. अंडरस्टैंड करो. इंसेलबर्ग्स वैली डिपनिंग से बने, अब वैली डिपनिंग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? वैली वाइडनिंग. सो ऐसे वैली वाइड होते जाएगी. फाइन. जैसे वैली वाइड होते गई तो माउंटेन साइड से इरोड होते गया, फिर से वैली वाइड होते गई, फिर से वैली वाइड होते गई. क्या कह रहा है वो? उसके बाद क्या पॉइंट होगा? नेक्स्ट पॉइंट में वो कहेगा इससे पैरेलल रिट्रीट शुरू हो जाएगा. वर्टिकल डाउन कटिंग लैंडफॉर्म से इंसेलबर्ग बन गए. फाइन. कटिंग से. अब वो कहता है इन द सेकंड स्टेज वर्टिकल इरोजन नहीं है, क्या है? लैटरल इरोजन. क्या है? लैटरल इरोजन. अब देखो, इमेजिन करो ऐसे लैटरल इरोजन हुआ है. दोनों रूम में आवाज आ रही है. कोहली जी किधर है? So initially this way V-shaped valleys were found. अब वो कहता है इनको इंसेलबर्ग्स. अब इन इंसेलबर्ग की हाइट कैसे कम किया जाए? एक तो डेविस को फॉलो किया करो तो खुद की थियरी नहीं दे सकता, तो अब कहेगा कि साइडवेज इरोजन हो रहा है. अब साइडवेज इरोजन हो रहा है मतलब ऑब्वियसली ये पार्ट इरोड होके गिर गया. फाइन. अब फिर से साइडवेज इरोजन नेक्स्ट टाइम होगा. अब ये पार्ट गिर गया, फिर से साइडवेज इरोजन होगा. अब ऑब्वियसली ये पार्ट इरोड हो गया, तो लैंडफॉर्म की हाइट क्या हो गई? कम हो गई. अब ऐसे बन गया लैंडफॉर्म. सेम विद दिस, ऐसे बन गया लैंडफॉर्म. ओल्ड एज में फिर से साइडवेज इरोजन होगा और इसको ये कहेगा पैरेलल रिट्रीट. क्या है रियलिटी में? फर्स्ट स्टेप वर्टिकल इरोजन, सेकेंड स्टेज स्लोप रिप्लेसमेंट. कॉन्केव स्लोप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. वो कहेगा इसको पैरेलल रिट्रीट. फाइन. So where did I stop? Where did I stop? Start of lateral erosion or valley widening. Next, valley widening causes backward retreat. Backward retreat मतलब पीछे. Backward retreat of valley sides. Valley sides. And therefore interflows or water divide, distance between two rivers, interflows. और उसका अगर ये वर्ड एग्जाम में याद नहीं आएगा तो वाटर डिवाइड reduces, and therefore water divide reduces. Third point, valley widening causes
development of concave slope, causes development of concave slope. मतलब उसको क्या लेके आ रहा है अब, स्लोप रिप्लेसमेंट, कॉनकेव स्लोप. समझ में आया? कॉनकेव स्लोप कैसे बनेगा? ऑब्वियस है, यू शेप वैली मतलब क्या है, कॉनकेव स्लोप ही है. नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द इंसेलबर्ग्स गोज ऑन रिड्यूसिंग. The height of the Inselbergs goes on reducing. To form Kessel copies. To form Kessel copies. Kessel copies means nothing but Inselbergs of smaller size. Understanding ये यहाँ तक आ गया. Landform. Look here. Inselberg has now formed Kessel copies. Next stage mature में क्या होगा? River बड़ी हो गई. Because river बड़ी हो गई तो जो बड़ी बड़ी rivers है उन दोनों का पानी मिल जाएगा. एंड देयरफॉर बाकी के केसल कॉपीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड अल्टीमेटली लैंडफॉर्म में जो बचे बचे बड़े केसल कॉपीज है, दे विल फॉर्म पेडी प्लेन. कुछ नहीं, डेविस की थियरी है. फाइन, सिर्फ नाम चेंज हो गया है. डेविस ने भी कहा था कि रिवर्स बिकम बिग, बीच में का वाटरशेड विल बी डिस्ट्रॉयड. पानी जब मिल जाएगा तो बचे बचे हिल्स रह जाएंगे. ये भी यही कहेगा कि सम ऑफ द स्मॉलर केसल कॉपीज विल बी डिस्ट्रॉयड एंड सिर्फ बड़े रह जाएंगे. एंड दस दिस विल बी पेडी प्लेन हैविंग शार्प हिल्स. उसको क्या प्रूव करना था कि नहीं, राउंडेड नहीं होते हैं, शार्प होते हैं, बस. उसके लिए पूरी एक थियरी. फाइन. सो नेक्स्ट, no, gradually numerous Inselbergs disappear due to parallel retreat of the scraps. मतलब अपर सेगमेंट का हाइट कम होते गया. एंड द मेनी पेडिमेंट्स मतलब फुट ऑफ द माउंटेन्स, मेनी पेडिमेंट्स. कोएल्स, मेनी पेडिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर और कोएल्स. कोएल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोएल्स? एक दूसरे के साथ जुड़ जाना. कोएल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और कॉटन को टच किया तो क्या हो जाएगा? बड़ा कॉटन बॉल बन जाएगा. दैट इज व्हाट इज कोएलिसिस. मेनी पेडिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, और कोएलिस टू फॉर्म. वैसे भी ये कोएलिस वर्ड याद आ जाएगा जब हम विल डू क्लाउड फॉर्मेशन. इवन इन जीएस यू डू इट. Coalesces to form extensive pediplane. To form extensive pediplane. So पहले उसने कहा स्क्रैप रिट्रीट हो गया, फिर बीच में के कुछ पेडिमेंट्स विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन एक्सटेंसिव पेडिप्लेन. अंडरस्टूड? ओल्ड एज. In the old age, most of the residual hills or Inselbergs, will disappear
most of the residual hills or Inselbergs will disappear, and the entire landscape will be converted into concave surface or पेडी प्लेन. कुछ नहीं है ओल्ड एज में. ओल्ड एज में ये है बचे हुए जो भी हाइट है और कम हो जाएगी और पूरा सरफेस कॉन्केव बन जाएगा. पेडी प्लेन. दिस इज हिज थियरी. रीड द एंटायर थियरी अगेन इन 2-3 minutes एंड आस्क मी एनी डाउट. क्यों? क्योंकि अगर घर पे जाके नहीं पढ़ोगे कल का लेक्चर नहीं समझ में आएगा. और अगर कल का लेक्चर नहीं समझ में आया, क्लास में तो सब कुछ समझ में आता है, घर पे जाके पढ़ो एटलीस्ट जियोमॉर्फोलॉजी. अदरवाइज अगले जून में जब उठाओगे किताब तो ऐसा लगेगा मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लिया. फाइन, ये एटलीस्ट ये टॉपिक्स के लिए, इसलिए पढ़ो. अभी जीएस अगर कम हो रहा है अक्टूबर तक, डोंट वरी, इनफ टाइम इज देयर फ्रॉम अक्टूबर. दिस इज द पीरियड ऑफ ऑप्शनल्स. Discuss slope development is a different topic, but the answer will be more or less same. कि पहले convex slope will become rectilinear, rectilinear slope will become concave. वो कहेगा उसको cycle of pediplane. और हाँ, slope develop, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये पढ़ो तो ही slope development समझ में आएगा. Why नीचे की line is straight? Because like Davis he believes upliftment has stopped. But same है as Davis. The only difference is shape. How is the shape? Davis में देखो, how is the shape? Had this been Davis? Rounded.
रेड लाइंस मतलब ऐसे पैरेलल रिट्रीट इज ऑकरिंग, यहाँ पे जाके ज्वाइन हो रही है बिकॉज उसके नीचे रिट्रीट इज नॉट देयर. Numerous Inselbergs. Inselbergs are starting to reduce in height due to parallel retreat and then pediplanation. This is the summary of his theory. Can I rub this diagram? Everyone? Yes. You can use the Castle copies also. It can be anything. They are also smaller Inselbergs are Castle copies. Castle copies was not called by him. Castle copies were called by subsequent followers.
foot of the mountain टूट के मिल गए to form paddy plain. Then he comes to the bus. That is even if you write this as an answer, it is more than enough. 200 words तो वैसे ही हो जाएंगे. 3 डायग्राम, पैरेलल रिट्रीट से पैडी प्लेन. सेकेंड डायग्राम में वी आर शोइंग कि पैरेलल रिट्रीट हैज स्टार्टेड. यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज. फिर वो कहता है पेंग से इंस्पायर होके फिर से पैडी प्लेन कैन गेट कन्वर्टेड इनटू youthful stage depending upon upliftment. Understanding why I have made this? So either this diagram in the exam या वो cyclic graphical representation कोई भी. I guess this is more easy. इसका मतलब दिस वॉज द इनिशियल, उसके बाद इट हैज. शुड आई ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपरली?
कलर्स यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए. So what is the process we are showing here? Valley widening या valley deepening? Valley deepening. अंडरस्टैंडिंग? पहले वी शेप था, फिर अब lateral erosion has started to occur. फर्स्ट स्टेज में वी शेप्ड वैलीज. Dotted lines can be anyhow. Don't worry about the dotted lines. This has got destroyed. This is remaining. Maybe this is remaining. Maybe this is remaining. ये भी आगे जाके destroy हो जाए. Just dotted lines show that this was once a mountain. It has now got converted into this thing. Fine.
अंडरस्टूड? 3 बिग मॉडल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, डेविस पेंग। आगे के जितने भी लेक्चर्स है जियोमॉर्फोलॉजी का, इसी का एप्लीकेशन है। समझ में आया? सो डू गो होम, तीनों मॉडल्स अच्छी तरह से फिर से पढ़ के आना। आई विल गिव यू डीमेरिट्स ऑफ किंग। एनीवन इज हैविंग क्लास? 2-3 demerits of king. Current studies of geomorphology has not yet identified any universal pattern of landscape development as claimed by king। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता। Any universal pattern of landscape development as claimed by king। Same point, next paragraph. In fact, even in Africa, such pattern is found only in the southern part of Africa। Southern part of Africa। Such pattern is found only in the southern part of Africa। southern part of Africa। अफ्रीका में भी कहाँ पे है? सिर्फ साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में है नहीं। फाइन। सो कल सेम डीमेरिट्स जो डेविस के है वही डीमेरिट्स कि टाइम में नहीं है, और सेकेंडली देर इज नो रैपिड अपलिफ्टमेंट। बाकी का डीमेरिट्स आर सेम लाइक डेविस। रैपिड अपलिफ्टमेंट ये कहता है विच इज़ नॉट देयर, सो आई विल डू दैट टुमारो। बट कल से ये डायग्राम्स बहुत कॉमन हो जाएंगे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम।